स्पॉटलाइट डालते हैं श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, उनके एमडी एंड सीईओ मिस्टर चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। मिस्टर चक्रवर्ती, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। डेटा ये शो कर रहा है कि काफ़ी हेल्दी ग्रोथ नज़र आ रही है, स्पेशली टू व्हीलर एरिया में, और ये काफ़ी दिनों बाद के बहुत बड़े गैप के बाद है। टू व्हीलर बहुत बड़ा हिस्सा था, लैग कर रहा था पूरे ऑटो स्पेस को। क्या ये ग्रीन शूट्स नजर आ रही हैं आपके बिजनेस में? You're right, but I think nothing exceptional. If you look at last year, same season, we have done almost the same amount. I mean, probably the numbers were same, but since the ticket sizes have gone up, so the disbursement amount has gone up. But otherwise, but then looking at the post second wave, I think these are we feel that these are the green shoots, and since the rural demand has not picked up fully, we hope it will pick up in the Q4, and that Q4 would be a very good quarter for two-wheeler, because the sales, if you look at the sales of two-wheelers, yes, they have come down. Financial-wise, yes, we have done well, but the overall sales of two-wheelers has come down, which I think we are along with the manufacturers, we are also keeping our fingers crossed that it will pick up in the Q4. राइट मिस्टर चक्रवर्ती, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा विच मे नॉट बी डायरेक्टली टू डू विद योर कंपनी, लेकिन आपके ग्रुप के बारे में जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और वो है कि श्रीराम कैपिटल आपके जो मेन कंपनी है और जो होल्डिंग कंपनी है, वहाँ पे एक उसका गवर्नेंस को एक बोर्ड स्ट्रक्चर में डाला गया है। सी आई जस्ट वांट अ पासिंग रेफरेंस, यू आर अ वेरी की पर्सन इन द ओवरऑल एट द कंपनी, और वो एक बड़ी कंपनी है, आपकी कंपनी भी एक पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में बड़ी कंपनी है। जब आपकी अपने हेड से बात होती है, मिस्टर त्यागराजन से, टीके जी से जिनको बोलते हैं इंडस्ट्री में, तो उनका सेंस क्या था? बिकॉज हम लोग इंडस्ट्री में बात करते हैं तो लोग क्वेश्चन करते थे कि भाई श्रीराम कैपिटल का गवर्नेंस कैसे, यहाँ से सक्सेशन प्लान कैसे होगा, गवर्नेंस कैसे होगा। आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो अभी नया स्ट्रक्चर बन के आया है, क्योंकि आप इतने टाइम से वो मेंटोर भी रहे हैं आपके, तो वो क्या थिंकिंग रही है मिस्टर टीके की जो ये नया बोर्ड स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने? See, if you look at it as an organization, we have always been a consultative organization. So we are like a Shriram Group is like a federal government. So each of the key people are involved in the decision makings, and it has been happening as far as I can remember. I'm 30 years old in the group. So from the day I've joined as a branch manager, we have always been asked for our opinions, and the opinions were given weightage in any decision. So it's always been we have always been a consultative team and group. But then since there, at that point of time, a promoter needs to be projected, Mr. Tyagarajan chose to be that person, and the group projected Mr. Tyagarajan. But then if you, it's been a few years since this kind of an informal setup is in place with the group, within the group, and it's been working quite well. Now that these questions in the media, some sections of the media and some investors have started asking after Mr. Tyagarajan, who? So I think he felt that it is better to formalize what is happening informally over a period of time. So that's the reason I think they have come up. Mr. Tyagarajan has come to in front of media and formalized the arrangement that has been there in place for quite some time actually. And as a CEO of one of the components, we've always been able to, draw on the experience and the wisdom of these four people along with Mr. Tyagarajan, and which will be available to us going forward. So, see, I think there is too much of an obsession on succession because we are a professionally run group. We are not a family business. So that concern is not, should not, I mean, it need not be there because we are totally a professionally run group. And there are enough
I would say understudies. You can say understudies to take the place of these 4 people if and when they retire. So on the succession front, I think the market had some misinformed views, or I would say probably not understood how we function. But as I said, succession is pretty well taken care of. Probably for the next 2 generations, the team is in place. Right. Thank you so much for answering us on that, Mr. Chakravarti. Coming back to जिस तरह की हमने लोन डिसबर्समेंट देखी है, अगर नवंबर मंथ की बात करें, हाईएस्ट एवर मंथ रहा है आपका, और इनफैक्ट एक बड़ी फिगर आप केटर करते हैं, सारी सैलरीड हो, नॉन सैलरीड सेगमेंट हो, तो एक अच्छी परफॉर्मिंग नवंबर मंथ रहा है. क्या की ड्राइवर्स रहे हैं, क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहे हैं? आपको लगता है कि फेस्टिव सीजन ऑफ कोर्स एक बड़ा रीजन रहा है, ओपन अप थीम रहा, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, और साथ ही क्या लग रहा है आपको, ईवी ट्रेंड भी एक बड़ा रीजन रहा है? No, EV trend is not a big reason because the entire sales of registered RTO registered EV two-wheelers is about hardly 50,000 plus, which doesn't swing the needle at all. Whereas I think for me, it's basically the gradually opening up of the economy, people getting back into businesses, cash flows coming back into businesses, and of course, aided by the festival season. But I would say primarily it's the economy opening up slowly, businesses seeing cash flows. मिस्टर चक्रवर्ती, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं जब आरबीआई पॉलिसी मीट और कमेंट्री के ऊपर भी इंडस्ट्री की नज़र है, जिस हिसाब से ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स का स्टांस चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, somebody who gets directly impacted in your business, which is your business, आपका क्या व्यू बन रहा है? आपको लग रहा है कि रेट्स कंट्री में ट्रफ आउट हो रहे हैं, यहाँ से ग्रेजुअली ऊपर चलेंगे, और कंपनी सच एज योर्स को कैसा इम्पैक्ट आएगा? See, I think for now, I think Q4, I don't think it will happen. Anything will happen in Q4. That's my personal opinion. But it is inevitable that rates may firm up probably next fiscal. On probably there is also a concern, as you rightly said, on the inflation side. So there could be some firming up of rates. But as a company, I think we are pretty okay on the increase in pricing on the price, because I think we have enough cushion and we will be able to absorb whatever if the borrowing costs go up. I think we have enough capacity to absorb it. We would like to, not burden our borrowers unduly, so we will try to hold our lending rates at what they are as of now. All right, Mr. Chakravarti, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी कैंडिडली सारे हमारे क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट